हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम आकांक्षा और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक DIY। नाउ विंटर्स में हम सबके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, ब्रिटल, बिल्कुल डल, कुछ शाइन नहीं है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। For this, I have made this oil up. Now, I am sure you have seen this recipe around a lot, but there are few things that I have figured out over the period of time that works and things that do not work, and I'll share that with you. So, without any further delay, let's get started. The first oil that I'm going to use is going to be a coconut oil. Now, coconut oil will work as a carrier oil. Reason being, एक तो it's very nourishing, it's very hydrating. So this will be the base for our main ingredients to work into our scalp and hair. So I'm going to take about 1/3 cup of coconut oil. So this much is going to be our coconut oil. The second oil for us will be olive oil. You can use any olive oil that you have lying around at your place. The reason we're using olive oil is because it is great for dry hair. It makes your hair smoother, stronger, and also helps lock the moisture in the dry hair. Now our third and final carrier oil is going to be सरसों का तेल. अब सरसों का तेल क्या करता है? इट्स वेरी वेरी हाइड्रेटिंग एंड नरिशिंग, नेचुरल कंडीशनर होता है, आपके हेयर को नरिश करता है, एंटी फंगल होता है, आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है. नाउ दैट वी हैव आवर 3 कैरियर ऑयल्स, इन सबका काम है नरिश करना हेयर को, हाइड्रेशन लॉक करना और आपके हेयर को और थिक करने में हेल्प करना. अब बारी आती है हमारे जो मोर ज़्यादा पोटेंट ऑयल है उनकी. तो मैं यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाली हूँ, विच इज़ कैस्टर ऑयल और बादाम रोगन. नाउ इट इज़ नॉट आउट ऑफ द काउंटर, ये कोल्ड प्रेस बादाम रोगन है जो आपको चक्की पे मिलता है. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू यूज़ दैट. इसके साथ हम 2 बहुत मैजिकल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे विच आई एम गोना टेल यू. But before that, the amount of castor oil I'm going to use is going to be 2 spoons. At least 2 spoons because it's very thick. So just going to. So the amount of castor oil I'm going to use is going to be 2 spoons. It's very thick. I'll just show you. See how thick it is. So at least 2 spoons is very important. You can add more डिपेंडिंग कि आपका ऑयल कितना थिक हो रहा है. सो आप उस हिसाब से यू कैन ऐड दी. सिमिलरली आई एम गोइंग टू ऐड बादाम रोगन. द रीज़न आई एम यूजिंग दिस इज बिकॉज इट्स प्योर आमंड ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, एंड यू कैन ऐड अबाउट 3 spoons of it. The reason I'm using castor oil and almond oil is because they promote blood circulation, they promote your hair to grow faster, and I think nothing works better than the combination of sweet almond oil and castor oil for your hair. And I highly suggest you to use these 2 together whenever you're trying to create any sort of oil concoction. So the final ingredient is going to be these vitamin E capsules. You can find them at any chemist store. अब विटामिन ई क्या करता है? ये आपके बालों की ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, नरिश करता है, एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग करते हैं कि बाल जल्दी टूटे नहीं. आप इसे यूज़ कैसे करना है? यू जस्ट हैव टू स्निप ऑफ द हेड एंड डायरेक्टली ऑयल. अगर आप मेरी बॉटल देखें, इट्स हाफ वे फुल, तो मैं इतने बॉटल में 4 कैप्सूल्स डाल रही हूँ. यू कैन ऐड एज मेनी और एज लेस यू वांट. अब आपको क्या करना है? आपको इसे बॉईल नहीं करना है. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल सी करी लीव्स को बॉईल करके बना रहे हैं. आई हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड नथिंग वर्क्स बेटर देन दिस वन. अब इसको आपने क्या करना है? आपने इसको 5 से 6 दिन के लिए डायरेक्टली धूप में रखना है, और जब भी आप इसे अपने बालों में अप्लाई करें उससे पहले 30 सेकेंड्स के लिए इसे वार्म कर लें और कॉटन बॉल से अपने रूट्स में लगाएं एंड अपने टिप्स पे भी. एंड आई वुड सजेस्ट कि इसे कम से कम हफ्ते में 2 बार यूज़ करें, स्पेशली विंटर्स में. एंड आई कैन गारंटी यू कि आपके बालों में डिफरेंस आपको दिखेगा विद इन 1.5 months ऑफ रेगुलर यूज. With this we finish our magic hair oil. I hope this video was helpful and I hope this oil works magic for you as it has done for me. अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं, don't forget to put them in the comment section below. Until next time, take care and keep glowing. Bye.